right? And these are the questions, ठीक है? As you can see, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में, ठीक है? These are the questions that is being asked, right? And most commonly asked questions हैं ये, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यही questions हर बार पूछेंगे, but generally, you know, like they play around these topics only, ठीक है? मतलब इसी के अराउंड वो प्ले करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन का फॉर्मेट दे कैन चेंज, ठीक है? और सिनेरियो डिफरेंट कर सकते हैं, बट द आंसर यू कुड से कि विल रिमेन द सेम, ठीक है? सो टेल मी फर्स्ट थिंग, ठीक है? दिस वाज द क्वेश्चन व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू इन IBM, right? Or one of my you know, like candidate was giving interview in IBM, right? So tell me how you know, make a connectivity between two VPCs. Tell me भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो. How you will make connectivity between two VPCs? By doing VPC peering between two VPC. Okay, can you do the VPC peering if both, you know, the VPCs are in different regions, in not in same region? Is it possible? Yes, we can do cross Yes. region. Okay. Cross So region VPC peering. nowadays it is possible. Earlier, initially in the initial years of AWS, it was not possible, but now it is very much possible. You can make the initial connectivity between two VPCs. Okay, so that is very much possible. So VPC peering would be the answer for this, right? So tell me now, what is the application load balancer, or simply what is load balancer? How you define the load balancer? Tell me what is load balancer. So it will basically distribute our incoming traffic across multiple targets. And Targets can be like EC2 instance, and it monitor the health of our registered targets. Anyone else? What is load balancer? Dishan, what is load balancer? Hello. Rishan, what is a load balancer? Hello. Bhai, what is load balancer? Load balancer. Basically, it balances the traffic, and that could be HTTP or HTTPS that we are getting on our web application. That's it. Mean तो यही है. Okay. So then what is okay, so let's consider, you know, like we have the you know, like couple of EC2 instances, you know, like that are that hosting our application, right, in Northern Virginia, and I have 4 instances, you know, running in Mumbai region, right? Okay. And I wanted to balance the load in between both the regions, right? Okay, so I have 2 instances in Virginia and 4 instances in the Mumbai, and I wanted to make use of the load balancer to balance the load, right? So how you will achieve this you know, requirement? Load balancer is region based, तो मुंबई वाले रीजन में जो होगा उसके लिए एक लोड बैलेंसर यूज करना पड़ेगा हम लोग, एंड नॉर्दर्न वर्जीनिया के लिए अलग करना पड़ेगा. But what if I want you to use single load balancer? You know, that in that case, you know, the you know, we can use different load balancer or region specific load balancer for, you know, like Mumbai, and one for the Virginia. ठीक है, that we can do. वो तो पॉसिबल है, लेकिन उस केस में क्या होगा, मुंबई वाला मुंबई पे राउट करेगा,
ठीक है, एंड दिस वर्जीनिया वाला वर्जीनिया पे करेगा, ठीक है, बट क्रॉस रीजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो क्रॉस रीजन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस। होंगी, आपने बताई नहीं है। ठीक है, होंगी, ओके, यस। So there are possibilities that is through the Route 53 that we will be discussing in upcoming lecture. But make sure ये question कभी कभार सिनेरियोस बेसिस पे आपको पुट कर देगा, डायरेक्ट बोलेगा 2 रीजन में मुझे लोड बैलेंस करना है एंड आई वांट यू टू मेक यूज ऑफ द लोड बैलेंसर, ठीक है। एंड एज यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन जो थेलिस करके कंपनी है, राइट? थेलिस या थेल्स, राइट? उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो नाउ राजीव, टेल मी व्हाट इज हेल्थ चेक? So health check is basically like, let's say I have deployed an application in EC2. Now I want to check whether it is running or not. So it doesn't monitor EC2, but it will monitor my application. So we can define various criteria, like you can specify whether my index.html file is present or not, or I can create any other file at any other location. So it will keep on pinging. We can configure threshold limit after how many seconds, again and again it will ping, and between 2 consecutive like if it is pinging to that file, like if I'm specify like 10 times, it should give me success result. What are the listener ports? Sorry? Listener protocol. What are listener protocol? Or what are listeners in load balancer? Load balancer. Listeners. Like it is a process only that check for connection request. Fazal, what are listeners? Listener protocol is a protocol which is used to define the port on the load balancers through which we can connect the instances. ईशान भाई, क्या होता है listeners? Why do we use listeners? Listeners का कोई रोल है लोड बैलेंसिंग में? नहीं भाई, रोल तो है, वो कुछ कंडीशंस लगा रहे थे ना हम लोग लिसनर पे। बेसिकली लिसनर्स क्या होता है? लिसनर्स होता है कि किस पर्टिकुलर पोर्ट पे आपकी रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर हैंडल करेगा। जो रिक्वेस्ट इनकमिंग ट्रैफिक आएगा, जैसे आपने HTTP ओपन करा है, सो इट विल ओनली बी लिसनिंग और मैनेजिंग द ट्रैफिक ऑफ HTTP, नॉट HTTPS, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी ओपन लिसनर पोर्ट्स, ठीक है। सो टेल मी व्हाट इज टारगेट ग्रुप? व्हाट इज टारगेट ग्रुप? टारगेट ग्रुप रूट करता है रिक्वेस्ट को वन और मोर रेस्ट, मतलब जो भी हम लोग टारगेट रजिस्टर करते हैं उस पे बाय यूजिंग सम रूल्स। टारगेट ग्रुप, देखो टारगेट ग्रुप राउट नहीं करता है, ठीक है। टारगेट ग्रुप इट्स लाइक कि आप लोड बैलेंसर के लिए एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो एंड इन दैट टारगेट, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया कि ये मेरे बंच ऑफ इंस्टांसेस होंगे, ठीक है, जिस पे कि मेरा लोड बैलेंसर के साथ मैं अपना टारगेट ग्रुप अटैच करूंगा, ठीक है। उस टारगेट ग्रुप पे मेरा लोड बैलेंसर जो है, जो भी ट्रैफिक होगा अकॉर्डिंग टू दी लाइक कॉन्फ़िगरेशन आई डिफाइंड, उस हिसाब से वो करेगा, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज पाथ बेस्ड राउटिंग? What is the difference between path-based routing and host-based routing? Pathway simply like, for example, Yatra site is there. They have multiple options to book tickets, air ticket or railway ticket or bus ticket. So based on path, I am defining like where should route the request. And host-based is particularly we specify the IP address of particular machine. Not the IP address, मतलब कोई और एग्जांपल दो। Okay. मतलब यू एंड यूजर तो कभी आपका IP से तो कभी वेबसाइट नहीं एक्सेस करेगा यार। Right. How can you give that example? Go on mute and think about it. What is host-based routing, Fazal? Host based
It will be the routing on the particular बेसिकली सब डोमेन क्रिएट करके, ठीक है, वी कैन हाँ, एक लाइक डोमेन पे रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो भाई लोड बैलेंसर से ये सब पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है दैट भी जो कि पूछा गया था एनईसी टेक्नोलॉजीज में, ठीक है, एज यू कैन सी हाउ द इंस्टेंस इज डिक्लेयर्ड एज अनहेल्दी, ठीक है, सो दैट यू नो इट इज द हेल्थ चेक मैकेनिज्म, ठीक है। यू कैन सी बोथ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन एनईसी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मुझसे ही पूछे गए हैं, ठीक है। ये जितने भी कैंडिडेट्स देते हैं, वी हैव अ कॉमन शीट, ठीक है। जो भी लेट्स सपोज इन फ्यूचर यू गिव इंटरव्यूज, ठीक है, सो आई विल शेयरिंग द शीट विद यू गाइस एज वेल, सो यू कैन आल्सो पुट योर क्वेश्चंस, ठीक है, सो दैट हमारे पास में एक बंच ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है, मतलब या एरिया प्रिपेयर्ड रहे कि कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हेल्थ चेक का देखो, मतलब बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, ये पूछते हैं, ठीक है। एंड मैंने कल भी बताया था, व्हेनेवर यू डिफाइन लोड बैलेंसर, मेक श्योर टू डिफाइन लिसनर एज वेल एज दी हेल्थ चेक, ठीक है, पूरा कंप्लीट बताना ही पड़ेगा, ठीक है। सो टेल मी what are the different type of load balancers available in AWS and what is the difference between application them? load balancer, As you can see, this is being asked in Mindtree. application load balancer, network load balancer, classic, और gateway और classic. What is the difference between application and network? Application load balancer runs on the application layer, and 7 layer and it is a flexible, it use the port HTTP and HTTPS, also like manage that, it balance the traffic between the HTTP and HTTPS traffic. Same wise the network load balancer, it runs on the transport level layer, on the network layer, TCP and SSL. and it balance the like TCP traffic and Okay, अब ये बताओ मुझे कि जो लोड बैलेंसर होता है, ठीक है, वो क्रॉस जोन होता है या क्रॉस जोन नहीं होता है? कौन सा एप्लीकेशन? कोई भी लोड बैलेंसर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग करता है या नहीं करता है? नहीं, क्रॉस जोन मतलब समझ रहे हो? क्रॉस जोन मतलब क्रॉस हाँ, अवेलेबिलिटी जोन। हाँ, दो करता है। अलग अलग करता है, लेकिन वही तू अभी बोला ना, वो रूट 53 के थ्रू जब करेगा इनेबल तब काम करेगा भाई नहीं, वो तो रीजन हो गया, ये तो क्रॉस जोन करता है ना, एक हाँ अवेलेबिलिटी जोन का और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में बैठा हाँ देगा। हाँ ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वगैरह में इनेबल होता है, बट उसमें तुम्हें जो इनेबल करना पड़ता है, ठीक है, एज यू कैन सी अच्छा, क्लासिक ठीक वाले है, में। क्लासिक वाला तो कोई यूज ही नहीं करता सिंस डिकमीशन हाँ हो गया है, ठीक है, हम्म, बट ध्यान रखना कि ये ऑप्शन भी होता है, ठीक है, क्रॉस जोन ओके, लोड बैलेंसिंग वाला। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। And now tell me what is public versus private subnet. As you can see, this was the question that was asked in DocSap. DocSap एक कंपनी है, ठीक है, डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था। Tell me what is public versus private subnet. बताओ भाई, VPC तो सबका हो चुका है। Public subnet route to an internet gateway, and private subnet set the route to a NAT instance. बट ठीक है, बट क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक यू सेड दैट इट Like inbound and पब्लिक outbound सबनेट जो traffic का main पब्लिक difference. जो है वो इंटरनेट गेटवे, बट व्हाट इज इंटरनेट गेटवे? To access the internet, Why do we use net gateway? प्राइवेट सबनेट के आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए कुछ उसको रिक्वेस्ट करनी होगी, कुछ रिसोर्स के लिए को डाउनलोड करना है। नहीं, you cannot give answers like this, कुछ और ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, राइट? सो पब्लिक सबनेट और इंटरनेट, गो ऑन म्यूट। जो इंटरनेट गेटवे होता है दैट इज टू एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है। वेयर डू वी अटैच इंटरनेट गेटवे? internet gateway is attached on the public subnet,
सॉरी, इंटरनेट गेटवे इज अटैच्ड टू द VPC। ठीक है, अब सही बोला है। और कहाँ पे, किस राउट टेबल में एंट्री होगी इसकी? ये पब्लिक राउट टेबल पे। नेट गेटवे कहाँ पे अटैच होता है? नेट गेटवे अटैच्ड होता है पब्लिक सबनेट के ऊपर, और प्राइवेट रूट टेबल पे एंट्री जाएगी इसकी। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजें। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, राइट।